हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर हम आगे बढ़े ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सके। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम ऋषभ नाहर जी के साथ बात कर रहे थे। वो कोड कैपिटल के को फाउंडर है और काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो उनके साथ हमने ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात की थी और सबसे पहले हमने देखा था कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉब्लम क्या है। तो रिटर्न्स तो मिलते हैं लेकिन ड्रॉडाउन्स भी काफ़ी बड़े होते हैं और ये ड्रॉडाउन्स को पचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए हमें ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ पे फोकस करना चाहिए और जहाँ पे हमने देखा था कि आप नॉन कोरिलेटेड असेट्स को मिला सकते हो, आप लेवरेज और हेजिंग भी यूज़ कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप लेवरेज और हेजिंग और ये कोरिलेटेड जो असेट्स है, नॉन कोरिलेटेड असेट्स है, उनको यूज़ करके आप एक बढ़िया सा ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। Apurva, how to build this, put buying strategy बहुत simple है. Um, so this is something I always say, Apurva, कि don't get married to the indicator. Indicator से कुछ अपने प्रेम नहीं है. The principle, the concept is कि अगर bear market चल रहा है तो puts खरीदने. But we are using the indicator just to define कि bear market क्या है, कब शुरू होता है bear market. So this strategy would work on any indicator. So what we have taken here for the users to try out themselves कि अगर आप 14 डे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लेंगे एंड जब भी निफ्टी क्लोजेस, सो आप इधर देख सकते हैं निफ्टी हैज क्लोज्ड बिलो द 14 डे सुपर ट्रेंड. सो ये कैंडल के एंड ऑफ एट द एंड ऑफ द डे यू कैन रन दिस. इनफैक्ट अगर आप 1 डे डिले भी करते हैं तो इसमें कुछ देयर इज नो सिग्निफिकेंट, कोई चेंज नहीं है रिटर्न में. सो इफ से यू फॉलो एन एंड ऑफ डे अप्रोच एंड शाम को 3:15 को आपने देखा कि the super trend is above the nifty is below the super trend, and that is a signal of a bear market. You start buying equity, you start buying puts. Now puts में क्या खरीदना है पूर्वा? You want to buy an at the money put. You want to buy an at the money put, but जो calculation है कि position size कितना है, that is something that most investors are, they don't understand कि कितना खरीदना है, एक लॉट लेना है, दो लॉट लेना है. तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 लाख का इक्विटी पोर्टफोलियो है तो उतना ही कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, सो 10 lakhs डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ निफ्टी. निफ्टी आज 23-25,000 है, so divide by that, whatever units you get, those are the number of units of puts you need to buy, सो right? ऋषभ, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक्सेल में क्या आप ये प्रैक्टिकली करके बता सकते हैं? लेट्स से किसी का Surely. 20 लाख का पोर्टफोलियो है, तो ये कैसे इनको लॉट साइजेस Yes, 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 yes. आइडेंटिफाई करनी चाहिए? So, Apurva, just a simple calculation. I'll just zoom in once. Okay, say for example, आपका investment in equities is, say for example, अगर आपने 10 लाख का इन्वेस्ट किया है, राइट है, एंड दैट मीन्स दैट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोरिलेशन 1 में निफ्टी अगर 1% गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी मे बी 1%, हाफ अ परसेंट और 1.5, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है, राइट. बट अपने को ये पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है. सो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. निफ्टी का आज का क्या वैल्यू है? फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का वैल्यू है 25,000, राइट. सो कितने यूनिट्स खरीदने हैं निफ्टी के टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ? सो 10 lakhs डिवाइड बाय 25,000, सो 40 यूनिट्स खरीदने हैं. ऑब्वियसली आप अपने लॉट साइज के हिसाब से उसको राउंड अप या राउंड डाउन करना चाहेंगे. सो इसेंशियली आज निफ्टी का एट द मनी से अगर हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, राइट अपूर्वा, आई कैन जस्ट ओपन अप द ऑप्शन चेन एंड bring out the nifty option chain. सिंपल आप एनएससी इंडिया पे जाके भी देख सकते हैं. इसमें कुछ एग्जीक्यूशन का कोई हरी नहीं है कि आज आपने एग्जीक्यूट किया एग्जैक्ट व्हेन द सुपर ट्रेंड वेंट बिलो. सो इफ आई एम लुकिंग एट अपूर्वा, ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का अभी करंट। या सो एक्सपायरी अगर हम मंथली एक्सपायरी देखेंगे ताकि हर वीक हमें चेंज नहीं करना पड़े, एंड अगर हम 25,000 का करंट एक्सपायरी देखते हैं,
and you want to look at 31st October, sorry, 25,000. Okay. So 31st October, 25,000 put is going at 167 rupees Apurva today. 166, 167. So अगर हम एक्सेल शीट पे वापस जाएंगे, अगर ये 166 या 167 है, so at the monthly 167 rupees चल रहा है. So अपना total investment in this put would be 167 into 40, which is 6,680. अगर percentage terms में देखेंगे, it is less than 0.6% of the portfolio. तो ऋषभ, इसमें निफ्टी की लॉट साइज अभी 25 की है, सो आइदर हाँ यू कैन डू 1 लॉट या फिर 2 लॉट करना चाहिए, राइट? हाँ, हमारा रिकमेंडेशन है कि सी जनरली के मोस्ट इन्वेस्टर्स निफ्टी में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज निफ्टी इज अ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड मोस्ट इन्वेस्टर्स का वॉलेटिलिटी इज मोर देन निफ्टी वॉलेटिलिटी. जैसे मोमेंटम हो गया, सो आई वुड रिकमेंड यू राउंड अप ऑलवेज, नो. तो अगर आप 50 लेंगे एंड सो दैट बिकम्स ऑलमोस्ट 0.8% ऑफ द पोर्टफोलियो, या 0.8% ऑफ द पोर्टफोलियो. तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा रहता है इसमें, राइट है. एंड जो हम बात करते हैं पूर्वा पहले के, पुट्स इज एक्चुअली वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, बिकॉज आप व्हाट इज योर मैक्स लॉस, आपका ये ऑप्शन जीरो हो गया, राइट. प्रीमियम जो दिया बट है वही। हाँ, बट मार्केट ऊपर भागेगा तब जीरो होएगा ना. तो पैसा तो बनना ही है आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में. सो इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड एंड दैट्स व्हाई डूइंग दिस. ये इसमें ना जस्ट अपूर्वा, आप जो मेडिक्लेम या लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो, ये हाँ, उसके जैसा है कि आप अपने पोर्टफोलियो पे परफेक्ट. के लिए आपको डर ये लग रहा है कि ईरान और इजराइल में वॉर हो गया, या यूएस रिसेशन में चला गया, या इंडियन मार्केट्स के जो कॉर्पोरेट नंबर्स आने वाले हैं वो शायद खराब आएंगे, तो मार्केट नीचे गिर सकता है. सो इन दैट केस यू कैन लेट्स से, अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि 10% मार्केट गिरेगा अगले 1 या 2 महीने या 3 महीने में, तो हाँ, आपको 1% का प्रीमियम दे रहे हो लगभग अपने पोर्टफोलियो का, और उसे हेज कर रहे हो. प्रिसाइसली प्रिसाइसली अपूर्वा. इसेंशियली मोर देन लाइफ इंश्योरेंस तो हम कहेंगे टर्म इंश्योरेंस है. एंड टर्म इंश्योरेंस में क्योंकि आपका प्रीमियम वैल्यू बहुत ही कम होता है, राइट, सो इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्चुअल सम अश्योर्ड. या आज अगर आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो मे बी 20,000 या 17,000 इज द प्रीमियम वैल्यू. सो दिस इसेंशियली लाइक दैट. बट अपूर्वा, इसमें एक चीज जानना जरूरी है कि टाइमिंग द मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इसको सिस्टमैटिकली फॉलो करना बहुत जरूरी है. सो आपको वो सब्जेक्टिविटी, जो सब्जेक्टिव एलिमेंट है, उसे निकालना है. एंड आप कोई भी इंडिकेटर लीजिए, जैसे आप एमए लीजिए, सुपर ट्रेंड लीजिए, एंड यू कंसिस्टेंटली फॉलो दैट इंडिकेटर. आप नहीं कि अच्छा मुझे लगा कि ऐसा होना है, बिकॉज ना ये जो बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस या जो इवेंट्स हैं जहाँ पे बड़े बेयर मार्केट है, दे आर नॉट ऑब्वियस इवेंट्स अभी हुआ. एंड बिकॉज द वर्ल्ड इज इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लेस है, इतने सारे कंट्रीज है, इतने सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसको करेक्टली प्रिडिक्ट करना रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ स्किल. एंड सो वी आर सेइंग कि नो, हमारे पास वो स्किल नहीं है. एंड अगर होता भी है तो माय इंडिकेटर इज डूइंग द जॉब, राइट. एंड आपको पता है कि ट्रेडिंग में प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, राइट. अगर मार्केट गिर रहा है, दैट मीन्स दैट द मार्केट नो समथिंग मोर देन व्हाट वी नो टुडे. सो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन अपूर्वा, सो ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी हमने देखा कि कैसे how it improves the risk return profile 24 to almost with a 13% drawdown, जो otherwise नहीं दिख रहा, जो drawdown about 40-50% था, and without sacrificing any sort of equity. आपका कुछ भी equity return आपने sacrifice नहीं किया है इसके लिए, right? Now एक और element है इसमें अपूर्वा, कि अगर आपका equity curve इतना smooth है, तो personally we think कि adding little bit of leverage is always good. या कुछ component of leverage, but again leverage to be taken in the correct format, right? So leverage in the form of buying. So this is the third pillar, leverage in the form of buying calls to bump up the CRMDD. So जो सुपर ट्रेंड हमने इंडिकेटर देखा था कि जब मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे है तब पुट्स खरीदना है, बस उसका इन्वर्स ही करना है. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. यू वांट टू बाय कॉल्स when when the super trend is below the nifty, and that means nifty is above the super trend. ये bullish signal आ रहा है. Now पूर्वा, इसका what is the effect on the portfolio and what is the quantum के इसमें कितना खरीदना है, that is something I'll just run through.
So now finally what we are looking at is equity plus gold plus puts and plus calls. Right? So what kind of risk return profile? इसमें अपूर्वा जानना है कि drawdown थोड़ा बढ़ेगा 2 to 3% से, but your return will also go up. So now you have come to almost a 31% return with a 16% drawdown. And your average drawdowns have also come to 4%, right? We think that 3 to 4% drawdowns, so investor आराम से देख सकता है उसमें. That is something that is very regular, that does not require much. You don't need to, आपको कुछ उसका, you don't need to worry about it. कुछ बड़ा drawdown आया तो आपका puts तो protect कर रहा है. Now going back to the drawing board, अपूर्वा, जो puts का buying का calculation था, the call buying is exactly the same. So we can just check out okay, um, what is the value of at the money call today, value of at the money call. So you see, Apurva, today the at the money call is almost double of the at the money put. Right, it is going at 380 rupees today, and that is because of the kind of market rally that is going on. But उसका एक advantage है पूर्वा के ना, we end up collecting more on the put side ना, we end up collecting a lot more units because of that. तो जब वो surprise fall आएगा ना, अगर if you are on the right side and you have bought the puts, your payoff will be very good. आप बहुत पैसा कमाएंगे, आपका पूरा portfolio protect हो जाएगा. Right? So if you're buying at the money call, it will cost you 381 rupees. Right? And so you'll have to spend 1.9% of your portfolio. You're spending almost double, but it is a smart way of taking leverage, Apurva, because अभी आपके पास put side में भी protection है, आपका drawdowns दो है, but now you want to bump your returns. ये 1.9% का जो buying करने से क्या, what is the effect of our portfolio? हमारा return went from 24% to 31%. I just want to, अपूर्वा, एक बार मैं ना दिखा देता हूँ आपको कि जिस तरह से how the evolution of the strategy has happened, right? हमने momentum से चालू किया, only equity allocation, essentially 25% with the 39% drawdown. The average drawdown was 7.7%. Then we went to momentum plus gold, how gold हमें protect करता है, uncorrelated asset class है. So the drawdown came down to 27%. Returns also came down by 3%. Then we added puts to the strategy, which the puts actually is a very significant factor over here. Puts essentially has saved us in this. So, by getting drawdowns from 39 to 27, 27 to 30. And then how the calls are adding leverage to the entire portfolio and bumping up the returns to 30%. So, Apurva, the beauty of the strategy is that you can engineer as per your risk requirements, right? अगर आपको ये drawdown 13 नहीं जम रहा है, आपको 5 या 6 या 7 पे लाना है, अब आपका पुट का एलोकेशन बढ़ा दीजिए, आपका इक्विटी का एलोकेशन कम कर दीजिए, आपका गोल्ड का एलोकेशन बढ़ा दीजिए, राइट? तो यू कैन इंजीनियर, आप इसको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इंजीनियर कर सकते हैं. सो essentially this is what we have. So this is a very simple, easily executable strategy. तो मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि आइडियल जो आपका ये रहता है, जो लास्ट कॉलम है जो ऋषभ ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बताई है, विच इज़ योर CAGR डिवाइडेड बाय मैक्स ड्रॉडाउन, तो ये आइडियली 1 के ऊपर होना चाहिए. मतलब कि आपका जो कालमार, इसको कालमार बोलते हैं, और ये अगर 1 के ऊपर हो तो बेसिकली आपका ड्रॉडाउन जो है वो आपके एवरेज एनुअल रिटर्न से कम है. सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज जो कि आप इजीली फॉलो कर सकते हो. और इसमें ऋषभ एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आप अपनी स्लाइड में पीछे जाएंगे जो पुट्स का, यस, ये या फिर इसके पहले वाला भी जो था, सो जैसे कि अभी यहाँ पे आई थिंक मार्च के स्टार्ट में आपको सिग्नल मिला कि यू शुड गो शॉर्ट, तो आप पुट्स बाई करेंगे. अभी आपने शायद मे बी मंथली वाला ही बाई किया होता, बिकॉज कि आपकी एक्सपायरी अभी फिर भी काफ़ी दूर है. तो आपका सिग्नल तो खैर अप्रैल और मई में जा कर के बाय वाला आ रहा है. सो हाउ डू यू मैनेज द ट्रेड इन बिटवीन? तो मैंने पुट खरीद लिया लेट्स से 2 और 3 मार्च को, फिर एक्सपायरी आ गई और फिर अगली एक्सपायरी भी आ गई, और मीनवाइल बॉटम से तो फिर भी ऊपर चला गया है. सो आपने प्रॉफिट देखा पुट की पोजीशन में, लेकिन आप उसको कवर नहीं कर पाए, अपने प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए. सो हाउ वुड द एक्चुअल ट्रेड वर्क आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड? और इफ़ यू कैन शेयर अ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो अगर आपने किया हो तो वो भी उससे व्यूअर्स को और ज़्यादा बेटर समझेगा.
तो बहुत सिंपल है अपूर्वा के, फॉर एग्जांपल अगर आज हम देखते हैं कि लेट्स टेक टुडेज एग्जांपल इटसेल्फ, राइट, कि आज हमने देखा कि 167 रुपीज में पुट मिल रहा है। सो 0.8% हमने खर्चा किया है इसके ऊपर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। नाउ समझो कि वी कैरी ऑन दिस ट्रेड टिल 31 ऑफ अक्टूबर। सो 31 ऑफ अक्टूबर तक ये द सुपर ट्रेंड इज अबव द निफ्टी, निफ्टी इज बिलो द सुपर ट्रेंड। तो ऑन 31 अक्टूबर मे बी एट एनी टाइम इन द डे आप अपना ट्रेड को रोल ओवर करेंगे। बट रिमेंबर, you will roll over not based on value, you will roll over based on number of units। तो आपके पास 50 यूनिट है तो आप नेक्स्ट मंथ का ही 50 यूनिट ही खरीदेंगे, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मैच योर इक्विटी एक्सपोजर। इसेंशियली पुट, आपका जो माइंडसेट है, आपका माइंडसेट है कि माय पुट इज नॉट टू मेक मनी, माय पुट इज टू प्रोटेक्ट माय इक्विटी एक्सपोजर। तो आप कभी वो आप वो सब्जेक्टिव कॉल मत लीजिएगा कि मुझे लग रहा है अभी और गिरने वाला है, मैं और पुट खरीद लेता हूँ, राइट है। तो इसमें पोजिशन साइजिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। So you are only spending 0.8%. So again, if we go back, if you are moving on to the next month, maybe next month, so say अगर the end of the month if it is below the super trend, most likely आपका या तो flat रहेगा या तो आपने profit कमाया रहेगा। तो आपने 167 में फिर भी बेच दिया। Now next month जब आप खरीदने जाएंगे, next month का जो expiry है, maybe it will cost you 250 rupees अपूर्वा। तो आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा 1.3%। सो दिस नंबर कीप्स वेरिंग, इट रेंजेस एनीवेयर बिटवीन हाफ अ परसेंट गोइंग अप टू 2.5%। 2.5% कभी जाता है पूरा जब मार्केट बड़ा गिरा हुआ है एंड ऑलरेडी बेयर मार्केट शुरू हुआ है, राइट। टुडे इट्स 0.8% बिकॉज बुल मार्केट चल रही है उसकी वजह से। सो इसेंशियली योर कैलकुलेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्सपोजर। सो अगर एट द एंड ऑफ द मंथ योर इक्विटी पोर्टफोलियो हैज गॉन टू 12 lakhs, तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, योर नंबर ऑफ यूनिट्स विल चेंज। मे बी इट विल बी it will be 12 lakhs divided by 25,000, so 48, again 50 units because of the rounding। या if you look at a bigger number कि अगर ये कोई कारण से आपका पोर्टफोलियो डबल हो गया, so maybe then you'll have to buy 100 units or 75 depending on where you're comfortable। um so that number keeps changing, but if you see the percentage will always remain anywhere between half to 1.5%। and we recommend that you use puts as mostly a hedging strategy and not as a money making channel। And the same thing for call also Apurva, जो same logic है। So actually this is always in the trade kind of a strategy कि अगर मार्केट इज बिलो द सुपर ट्रेंड, आपका पुट्स आपने खरीदा है, मार्केट इज अबव द सुपर ट्रेंड, तो आप कॉल खरीद ले। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास वो एक सिंगल पोजीशन ऑलवेज खुला रहेगा, राइट। Right. Are you getting basically the puts and the call side, Apurva? सो इसमें फाइनली प्रॉफिट मतलब जो पोजीशन काटनी है वो जब सुपर ट्रेंड के ऊपर निफ्टी जाएगी तभी हम ये काटेंगे। सी अंटिल एंड अनलेस क्या है ना अपूर्वा के, ये जो बड़ा प्रॉफिट आता है दैट इज द वंस इन 3 to 5 year इवेंट। सो यू विल बी रॉन्ग मेनी टाइम्स, यू विल बी रॉन्ग मे बी 70% ऑफ द टाइम्स अपूर्वा इसमें। सो दैट डिसीजन टू री इन्वेस्ट द प्रॉफिट्स इज वेरी इजी टू मेक, बिकॉज जहाँ पे आपने 100-150 रुपए का पुट खरीद लिया, मार्केट अगर 10 टका गिर गया तो आपका 150-200 रुपए का पुट 2,000 हो जाएगा, right? Essentially, if you just do the math today, Nifty is at at a 25,000। So if Nifty comes down to 23,000, आपका put in the money हो जाएगा, and your put should at just a intrinsic value should be 2,000 rupees, right? आपने for example अगर we are going back to our original example, दो 10 लॉट अगर lakhs खरीदा है तो या 2 लॉट अगर आपने 50 खरीदा है, वन so you spend 7,850 rupees। Today this is valued at 2,000 rupees। 1 लाख हो गया उसमें। हाँ 1 लाख हो गया, सो विच बिकम्स ऑलमोस्ट 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो। तभी हमें डिसीजन लेना है कि ओके इसको री इन्वेस्ट करना है या क्या करना है। बट दैट इज अ वेरी इजी डिसीजन में, क्योंकि अगर मार्केट 10, 15, 20 टका डाउन है, इफ निफ्टी इज डाउन 20%, लाइक कोविड में इसेंशियली अपूर्वा निफ्टी वाज डाउन से 40%, बट अज्यूमिंग के 5,000 पॉइंट्स अगर गिर गया निफ्टी एंड आपका पुट इन द मनी हो गया, तो यू विल ऑलमोस्ट योर पुट पोजीशन अलोन विल बिकम 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो। बट दिस इज essentially Apurva giving you that protection, right? If you look at the option chain back in March 2020, मतलब कुछ भी चल रहा था, like the kind of IVs you were getting, right? So this will happen, it's in once in 5, once in 10 year event, but today you are prepared for it, you are not worried। And Apurva, why this is important, हम ये चीज के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं, because if we go back to the first slide Apurva, um, so yeah, if you go back, this is where I began, this is where I was today।
this seems like an event which might happen. There is a likeliness of it happening. Maybe the probability of it happening from over here could be a lot higher. So today, आज जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला था वो आगे, आज जो इन्वेस्टर शुरू कर रहा है, जो नया पैसा लगा रहा है, वो रिस्क, वो he is taking that margin of safety बहुत low है. Today there is not as much room for error. Definitely, Apurva, the market is doing well because India is doing well. Earnings are coming in, there is continuous growth in earnings, but all that is priced in today. We feel that the next 3-4 years of growth is priced in, so the margin for error is very small. Agar earnings nahi aaya, then the hit can be very big. So going again on that principle, we want to remain invested, but we want to remain protected too. Got it. Yeah, so Apurva, that is more or less, we have been running this strategy live. We also currently are allocating a large part of our funds to this strategy because we feel that it's a good time. There was one more thing, Apurva. So in the equity piece, we are doing momentum, right? As a strategy. There is another ETF called the Nifty 100 Low Vol 30. It is a low vol ETF, and that has actually a low correlation to the momentum ETF. So if you want to, अगर आपको अपना portfolio और optimize करना है कि equity, I don't want to be exposed to momentum, so you can mix your 75% exposure में आप 37.5% momentum make सकते हैं, 37.5% the low vol ETF, and you will again see a much better Kalmar ratio than what we have seen at 1.8, 1.8 might go to 2.3, 2.42. ओके. और एक ये जब हम पुट्स की बात कर रहे थे, सो जैसे कि हमने देखा कि योर यू आर बाइंग मोमेंटम 30 ETF, एंड अभी जैसे कि ये एक और वेरिएशन आ गया कि लो वॉल वाला भी ETF हम बाई करके एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. और फॉर दैट मैटर, अगर जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं शायद उनका एक अलग खुद का पोर्टफोलियो होता, तो इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग सुपर ट्रेंड on the Nifty, which may or may not be very strongly correlated to what I am doing, तो क्या मैं अपने जो ये ETFs है उस पर मैं सुपर ट्रेंड लगा के ये करना बेटर रहेगा कि इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू गो विथ निफ्टी, या फिर जो मेरा इक्विटी कर्व है वॉट एवर पोर्टफोलियो आई एम रनिंग, सो इट इज़ लाइक एन इक्विटी कर्व ऑफ माई ओन, तो अगर वो इक्विटी कर्व पे मैं सुपर ट्रेंड लगा दूँ और जब वो गिरे तो मैं पुट्स बाई कर लूँ. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? So essentially, that is a thought. I mean, we've also tested this concept आप जो बता रहे हैं, but हम निफ्टी क्यों खरीद रहे हैं, क्यों निफ्टी पे ही सुपर ट्रेंड चला रहे हैं? बिकॉज हम निफ्टी के पुट्स खरीद रहे हैं. Unfortunately, there is not as much liquidity in the mid cap index on the monthly or the quarterly time frame, right? So that's why we are not able to buy that. But अगर वो evolve होता है, definitely I would say कि if your portfolio is a momentum or a mid cap ETF, then you run this on a mid cap, but you want to buy the mid cap puts also. आप अगर आपके पोर्टफोलियो पे चला रहे हो निफ्टी का पुट्स खरीद रहे हो तो उसमें बहुत मिसमैच हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई अगर ये 2018 में इनफैक्ट ये फिनोमिनन हुआ था. सो इफ यू लुक एट 2018 हमारा वर्स्ट ईयर था, राइट अपूर्वा? इन 2018 द रीजन बीइंग के द मिड कैप इंडेक्स डिड एक्सट्रीमली बैडली, बट निफ्टी वाज अप दैट ईयर. तो जो पुट का प्रोटेक्शन था, हमें पूरी तरह से पुट का प्रोटेक्शन नहीं मिला, right? Nifty was flat or Nifty was up 2-3%, but my mid cap portfolio lost money. So this is a phenomenon that will occur. That's why gold comes into play in that year. In that year, gold did very well for us. So it protected my portfolio. So having gold, otherwise, I would have said, yaar, agar it is a proper inverse correlation, then you can only run the put strategy. But because it is not inversely correlated, that's why adding gold. In fact, if someone comes across more commodities or more elements which are uncorrelated, then please, if you can try and test that out, it might help. So essentially, आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि should we run it on my own portfolio? No, I would yet recommend that you run it on Nifty itself because आप Nifty के puts खरीद रहे हैं, right? So if Nifty is in a bearish trend, then you want to buy the puts, even if ऐसा हो सकता है कि momentum is up and Nifty is down. But अगर आप momentum पे वो चीज चला रहे हैं तो आप Nifty पे खरीदेंगे ही नहीं, right? So that's why, yeah, we would say that you rather run it on the Nifty itself. Okay. Yes. Got it. So Apurva, I mean, that is more or less the summary of the all-weather
portfolio. And if someone wants to run it by themselves, please go ahead. It's very simple. But if you think that आपके पास वो time नहीं है, वो समय नहीं है, and हम एक चीज in terms of what I would say alpha, or in terms of say, because we have the edge because we are spending that time in terms of the research, and we have a research team in place. तो अपूर्वा हम क्या करते हैं कि हम ये ratios को optimize करते हैं. हमारी रिसर्च ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती है. फॉर एग्जाम्पल आई स्पोक अबाउट दैट लो वॉल पीस. कल उठ के कुछ नया चीज भी आता है, वी विल एड इट टू द ऑल वेदर पोर्टफोलियो. If markets are down big and we feel कि Apurva, if for example if market is down 35-40%, मेरा मोमेंटम में एलोकेशन बढ़ना चाहिए. देयर इज अ टाइम व्हेन रिस्क ऑन होना चाहिए, देयर इज अ टाइम व्हेन रिस्क ऑफ होना चाहिए. सो those are calls that we take internally, and that's where a little bit of the edge also comes through. So if the investor is interested in running this product with us, we are very happy to have a conversation also. श्योर, एब्सोल्युटली. सो आपकी वेबसाइट की जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे छोड़ देंगे. सो whosoever is interested in getting in touch with you can visit Yeah, your sure. website and find all the contact details over there. Yeah. So And this also we'll put up this presentation, Apurva, so that if anyone wants to run this by themselves, we are very happy to help people. क्योंकि क्या है ना अपूर्वा, अगर आप ये चीज में नॉलेज के साथ जाएंगे 100% सक्सेस मिलेगा. सो इवन इफ यू आर रनिंग इट बाय योरसेल्फ, आप पूरा नॉलेज के साथ जाइए, उसको कंस्ट्रक्ट कीजिए पोर्टफोलियो को, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा. Sure, absolutely. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरा ये कॉन्वर्सेशन रहा है. आई वुड लाइक टू थैंक यू ऋषभ. आपने बड़ी ओपननेस और फ्रैंकनेस के साथ सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को फिर भी सवाल होंगे, सो दे विल स्टिल वांट टू आस्क क्वेश्चंस टू यू. तो मैं आपसे और आपकी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इफ़ देर आर एनी क्वेश्चंस, तो जो हमारी यूट्यूब वीडियो की नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा. एंड आई थिंक इट वाज ग्रेट कॉन्वर्सेशन विथ यू. सो Thanks, थैंक यू. Apurva. Yeah, लेकिन इसके पहले कि हम आपको जाने दें, देयर इज़ अ स्मॉल थिंग विच वी डू कि ज़्यादातर हमने देखा है कि ट्रेडर्स हमेशा दिन रात ट्रेडिंग और मार्केट्स में ही डूबे रहते हैं. दे डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम मार्केट्स. तो जस्ट टू एंड ऑन अ डिफरेंट नोट, वी हैव अ रैपिड फायर राउंड. तो Yes. हम आपसे भी एक ये कुछ सवाल पूछना चाहेंगे. Yeah. सो ऋषभ, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट बुक? My most favorite book. So there is this book called The Culture Code. It was written by an author, Mr. Coyle. So basically, now the thing is that I think so, and that's what we have imbibed in our culture over here. Is it's all about the people. जो strategy है वो returns है, stock selection है. Actually, it is not a one man thing. ये कोई एक आदमी का काम नहीं है. It is actually all about a group of people creating the right environment, cultivating that environment, ताकि सब साथ मिल के ये चीज करें. And that culture code actually taught us that very early on कि team का क्या मतलब होता है. So today, whatever we have built is, I know I cannot do this personally alone. It is because of, my team has come together. Everyone has that simple purpose, that same purpose. Everyone has that same goal, and like minds, when they come together, what they can build. So the other book, it's called The Culture Code, and that is my favorite book. Sure, absolutely. So what are you watching these days? So honestly, I've not got any time to watch anything because I have a 2-year-old baby. So mostly watching her, playing with her, just trying Sleepless to nights and sleepless nights. Yeah, roller coaster ride. roller coaster ride. But honestly, it's been great. It's a different phase of life. Yeah. Yeah, absolutely. So what is the most memorable day of your life? I think इसका आंसर मुझे पता है. I think most memorable day in terms of if I would say in terms of markets was somewhere in March 2020 when we had the put position on, and we were like, see, the thing is that I think so wealth is a relative concept, Apurva, कि जब सब पैसा गवा रहे हैं आपने पैसा कमा लिया, even if you have not lost money, it's a different feeling in itself, right? So so I think in terms of the market, that was the most memorable day. But other than that, in life, when my daughter was born. And one life lesson that you would like to share with all of us? I think so, in terms of the markets,
we should not look at it as a singular event. We should not look at trading as the end goal. The end goal is much more than just trading and making money. Can we actually create some value? Can we have some lasting impact? This is something that I learned that for a trader, you are as good as your last trade, right? But if you can do much more than that, if you can educate people, if you can build a business which can last much more than that last trade, then I think it has a bigger impact. So yeah. Absolutely. So yeah, that's all from our side for today. Thanks a lot, Rishabh, for Thanks. sharing all the insights. आपने बहुत शिद्दत के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे आज आपके साथ ये पूरा कॉन्वर्सेशन में आया. So thanks a lot once again for Thank you. Sharing all the Thanks. insights. Yeah. Thanks a lot for having us. थैंक यू. तो ये थे ऋषभ नाहर जी. इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने ऑल वेदर इन्वेस्टिंग के बारे में बात की. तो सबसे पहले हमने देखा कि जो प्लेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें प्रॉब्लम क्या है. रिटर्न्स अच्छे हैं लेकिन ड्रॉडाउन्स भी काफ़ी बड़े हैं. तो ये ड्रॉडाउन्स को कम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो उसके लिए हमने देखा कि आप इक्विटी में एक मोमेंटम ETF कोई स्ट्रैटेजी एक इम्प्लीमेंट कर दीजिए और इसके बाद आप गोल्ड में भी थोड़ा एक्सपोजर लीजिए और फिर फाइनली अगर आपको रिटर्न्स अच्छे चाहिए तो आप लेवरेज ले सकते हैं बाय एडिंग कॉल्स और रिस्क को कम करने के लिए आपको पुट्स खरीदने चाहिए जब भी मार्केट नीचे गिरे तब. सो इन जो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन से आप एक बढ़िया सा ऑल वेदर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बना सकते हो जहाँ पे आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे और ड्रॉडाउन्स काफ़ी कम हो जाएंगे. तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच. Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.